and you are watching us on Facebook. You're listening to us on Radio Azad, where your voice matters. And this is Doubleshot Espresso with life coach Tasneem and Ayesha. Hello. Hello. Good morning. How are we today? We are good. How about you? We are also surviving and hoping to be thriving as soon as I've seen you this morning. Oh, that is so sweet. Okay. Well, we have a wonderful topic for you today. And that is on colorism. Or until I started actually finding out a little bit more about this topic, I had no clue there was even a term called colorism. And then I interviewed this delightful young lady a few years ago, Fatma Lodi, who started this campaign called Dark is Divine. Yes. And she helped to define it for me. And I was like, whoa. So all our lives, we've grown up with this concept of, how white is beautiful and dark is not so good. But, to really understand it is what we are going to be doing today. Or prompted by an article written by a young lady called Zaina Sayed. And I was privileged enough to be interviewed by her for the Dallas Morning News and, of course, let loose on my thoughts on the subject. And then Tasneem and I said, all right, let's talk a little bit about it today. So, Jana, we grew up with these lyrics, right? Jiski biwi kali, uska bhi bada naam hai, ya jiski biwi gori, gore rang ka zamana, savli saloni si mehbooba. We've heard it all of our lives, right? If white and fair is just beautiful, or जो है एक औरत में this is the standard of beauty, लंबी होनी चाहिए, लंबे बाल होने चाहिए, she has to be fair and दुबली पतली, और एक image है of the epitome of grace and beauty, and alas, we fall short of what we see in magazines, on TV, and in the eyes of prospective mother-in-laws. Strike 3, we're not good enough. Bahu material. Okay? So where did this obsession with Gora Rang, white is beautiful, dark is bichari, come about, right? What has shaped our perception? क्या रंग बदल सकता है या नहीं, और क्यों? Why should we succumb to this whole perception of society's perception of what actually is beautiful? So where does this Asian obsession with white skin come from? How and has the West influenced us in this regard? The might of white? I know, right? Wow, that rhymes. Why the emphasis on Gora skin? And what do people do? It's a multi-billion-dollar industry, right? Fair is lovely. I know, and even though they've changed it now, I was reading an article last evening, and they said that, even though there's so much awareness on it, the numbers are just staggering. I mean, it's a booming industry even yet, so there's a long way still to go. Mm-hmm. All right, so let us know if you can see us on Facebook and you can hear us okay, or also call in. Studio phone number is 972-501-9390. That's 972-501-9390. Yep. So I think, Aisha has given such an amazing introduction, because the fact is that this has been within us from childhood, from the very, very beginning. Colorism or shadism, which is discrimination based on skin color, has been with us from generations. And I think it was interesting when I read this statement, which said that depending on your age, gender, and nationality, your view of color would be extremely subjective and different, and therefore tied to many personal experiences too. So we'll talk more about that statement, but before that we have a caller, so let's take them first thing in the morning. Radio Azad, you are on the air. Assalamu alaikum, ladies. Walaikum assalam. How are you? Just fine, thank you so much. Just so excited to be on the air with you all. कि मेरी आवाज आपको पता चल रहा होगा कि I'm so happy for it. Yes, SKF ji, I think you should start like a free service of just pick me up. Like जब भी किसी को ऐसा हो रहा है ना कि आज थोड़ा sluggish day है, आज थोड़ा
You'll just come and say, Assalamu alaikum, how are you? And you're like, मेरी फैमिली यही बोलती है Yes. तस्नीम, यही अल्फाज उन्होंने रिपीट किए कि हम लोगों को रोज सुबह कॉल करके जरा तुम चीयर अप कर दिया करो, क्योंकि आवाज से जरा सा उनके दिल खुश हो जाते हैं. तो दैट इज अ क्वाइट कॉम्प्लीमेंट. थैंक यू सो मच. थैंक यू My सो pleasure. मच. तो ये तो सदियों से चला आ रहा है. मैं एक किताब पढ़ रही थी, द एंशिएंट रेमेडीज ऑफ क्लियोपैट्रा, नेफ्रिटी एंड ऑल. तो उस वक्त भी था Right. ये जैसे पर्ल्स को क्रश करके एक पाउडर बनाते थे अपनी रंगत को गोरा करने के लिए, या चावल के जो वो निकलता है ना पानी, जी. उसके अंदर कुछ और गुलाब के फूल के पेटल्स वगैरह डाल के, ताकि फ्रेश स्किन लगे, मगर फ्रेशनेस के साथ गोरेपन को बहुत एसोसिएट किया जाता था. कहीं पर भी ऑपोजिट नहीं लिखा है कि हाउ टू मेक इट डार्कर, बट फेयर लिखा गया है. True. तो जैसा जैसा टाइम गुजरा वही चीज दिमाग के अंदर इंस्टॉल हुई, और हिस्ट्री कुछ इस तरह से हुई कि जिन लोगों के पास पावर आए, जिन्होंने कॉलोनाइजेशन किया, वो गोरे थे ज्यादातर. बिल्कुल. मैं अपने व्यू बता रही हूँ. और एलिस वॉकर की 1983 की एक बुक थी, इन सर्च ऑफ आवर मदर गार्डन्स, उससे ये लेबल कलरिज्म स्टार्ट हुआ. एंड देन मैंने ये देखा कि जब हम लोग ईस्ट पाकिस्तान में थे तो गोरी रंगत को इतनी तरजीह दी जाती थी कि जब एम्प्लॉय भी करते थे लोगों को, तो जो लाइटर स्किन के लोग थे उनको जैसे घर के अंदर के काम और बाहर के डार्कर स्किन लोगों को आउटसाइड के काम, जो ग्रूलिंग ज्यादा होते हैं. तो मेरी नजर में जो पावर में थे, जिन्होंने कॉलोनाइज किया, जो हुक्रमा रूलर्स थे, ये टाइम के साथ ये चलता आया कि गोरे रंग का एक अपना मुकाम है. और वो भी हेल्प हुआ थ्रू आउट द हिस्ट्री. सोशल मीडिया वगैरह तो अब काफी 20-25 साल से वो हुआ है, मगर अगर आप मूवीज वगैरह में देखेंगे तो कब के मैं बांग्लादेश में ये गाना सुनती थी, गोरे गोरे बांके छोरे, कभी मेरी गली आया करो समाधि का, एंड देन चलते चलते गोरी गोरी कलाइयां. जब चूड़ियां खरीदने जाते थे तो जो चूड़ियां पहनाते थे वो कहते थे कि अरे ये गोरे रंग पे ये वाली चूड़ी बहुत अच्छी लगेगी एंड ऑल. सो ये टाइम के साथ ये इंस्टॉल हुआ, जैसे दूसरी चीजें इंस्टॉल हुई कि पैसे से ही इंडिकेटर है सक्सेस का. उस तरह से ये हुआ कि ब्यूटी का एक सेट स्टैंडर्ड है कि जरा सा रंग गोरे तरफ हो. हालांकि वो बिल्कुल नहीं है, बट आई रिसेंटली रेड आर्टिकल इन नेशनल ज्योग्राफिक कि times are changing, beauty is coming in various shapes and sizes and colors, and it is getting improved than what it was before. Like fair and lovely cream को question किया जा रहा है आजकल कि ये वही थोड़ी है. So मैं समझती हूँ colonization, those in power, and also the beauty industry मॉडल्स उसी रेस से ताल्लुक रखते थे जो रंगत जिनकी गोरी है, और गोरे रंग को फीचर्स से भी एसोसिएट किया ना. एरियंस एंड ड्राविडियंस बैक होम इन इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट, इफ यू सी. बिल्कुल. So I think this is a prejudice, which goes on and takes shape and connects it to status. Right. और of course उनपे लव मैरिज हो तो ये सब चीजें इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, या पसंद की शादी, मगर जब लड़की देखने जाते हैं या लड़का देखने जाते हैं तो एक चीज जरूर होती है कि गोरा रंगत हो तो जरा आसानी होगी. तो आई डोंट बिलीव इन इट. ये मेरे व्यूज हैं. आई होप इट रिलेटेड टू यॉल. जैसे सीधे बाल को कंपेयर टू कर्ली है, जो सो मेनी थिंग्स और स्लेवरी वगैरह से कितना एसोसिएटेड हुआ है ना, कंटिन्यूड ऑन. तो वही बात हुई पावर की, स्लेवरी की और ब्रेन वॉशिंग की. थैंक यू लेडीज. Thank you. I think the important thing to note here is that we can't control what we're born with, and one of the points that she said is whether you have straight hair or curly hair. It's not in our control. जितना भी हम straightener कर दें, जला दें अपने आप को, or the color of your skin, or the tone, or your height. These are things beyond your control, right? Yeah. So it's more about how things are perceived. Let's take a caller. Radio Azad, you're on the air.
जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्योर खवातीन का प्रोग्राम था, लेकिन बस ऐसे ही मैं अभी ड्राइव कर रहा था तो मैंने लगाया हुआ था। अमूमन मैं लगाता ही हूँ, ये मेरा टाइम नहीं होता, मैं 2 बजे के बाद सुनता हूँ। अच्छा। तो लेकिन आज आप लोगों से मेरा दिल चाहा थोड़ी सी मैं बात कर लूँ, वही आप लोगों से पहली बात। तो लेकिन असल में मैं ये कह रहा था कि आप लोगों का जो वो टॉपिक कलरिज्म पे था, उसमें एक छोटी चीज शेयर करना चाहता था कि हुस्ने कायनात में रंग। दोबारा कहिए। हुस्ने जन से है कायनात में रंग। ठीक है, बिल्कुल ये सही। तो है मेरा पहला टाइटल पॉइंट जो मैंने आपको बताया। जी अब बात रही दूसरी, वो ये कि आप यकीन करें, अभी आपको पता है कि वो हमारी इंसाइक्लोपीडिया जो है ना, माशाल्लाह वो बहुत जानती है, बात करती है, करना जानती हैं, और पूरी वो आपको पता है एविडेंस के साथ बात करती है। लेकिन असल में जो एक चीज मैं शेयर करना चाहता था कि ये जो 2-3 चीजें उन्होंने बताई है ना, और उन्होंने देखिए उसको स्पेसिफिक कहाँ से बताया कि हमारे ये जो हम लोग इंडो पाक वाले हैं ना, ठीक है ना, ये जो सॉरी ये जो खन्नास भरा हुआ है ना, ये सिर्फ हम लोगों के दिमागों में है, वरना जिस जगह हम यहाँ पर रहते हैं मल्टी नेशनल, आपको पता है कि यहाँ पर जिस रीजन में हमें, आप ये देखिए कि गोरी चमड़ी वाले जो है ना, वो काला करने के चक्कर में आपको देखें पड़े रहते हैं समंदरों पे कि हमारी चमड़ी काली हो जाए, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर जो हमने ये भूत भरा हुआ है ना, अल्लाह की जात जानती है, वो पता नहीं किसने ये किताब में लिख दिया था और वो उसने पढ़ लिया और उसने उसको स्प्रेड कर दिया और वो आज तक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। हालांकि मैं तो ये कहता हूँ कि खवातीन जो है ना, चाहे वो छोटी हो, मोटी हो, लंबी हो, लेकिन माफ कीजिएगा, आप लोग सब खवातीन है, उनको अपनी जबान जो है ना वो बस संभाल के इस्तेमाल करें। आप यकीन करें कि सारे मसले हल हो जाते हैं, वरना आप देखिए कितनी मिसालें हैं कि जबान से ही शुरू होती हैं और घरों में नाइतफाकियां शुरू हो जाती हैं, और उसी जबान के कंट्रोल की वजह से बेहतरीन मिसालें हैं घरों की। चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। मैं आपसे चाहता था, और अगर मेरी कोई बात ऐसी हो तो मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ। रिजवान साहब बोल रहे हैं, राइट? आप रिजवान साहब बोल रहे हैं? जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मुझे याद है। जी, आप तो कॉल इन करते थे हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। जबान साफ होनी चाहिए। पॉइंट नोटेड। पॉइंट नोटेड। रेडियो आजाद, यूर ऑन द एयर। जी अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है शाहिदा जी? अल्हम्दुलिल्लाह, डूइंग बेटर एवरी डे। गुड गुड गुड। हाँ जी, तो मैं अभी इससे पहले ना, प्रोग्राम से पहले एक्चुअली आई वाज वाचिंग समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एन इंग्रेडिएंट माइका। ठीक है, ओके। व्हिच इज यूज्ड इन द प्रोडक्ट मेकअप्स में, जो उसको वो हाईलाइट करने के लिए और गिव यू मोर ब्राइटनेस एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड वो बाकी चीजों में भी होता है, लेकिन दे आर यूजिंग दैट एंड उससे द थिंग आई वाज वाचिंग वाज लाइक इंडिया में जो माइंस है ना, वहाँ पे ये पाया जाता है। एंड व्हेन दे आर पुटिंग इट दैट दे आर यूजिंग चाइल्ड लेबर आल्सो। So what does this do? Mica, you said. MICA? Yeah, MICA, mica. Okay. And it is actually used in brightening. Okay, और जब आपको वो हाइलाइटर्स आजकल बहुत चले हुए हैं ना, कि लाइटर हाइलाइटर और दिस एंड दैट, उसमें ये डाला जाता है। Right. Shahida ji, you are in this perfect industry because you are in the makeup business. So ये जो आपके पास साउथ एशियन औरतें जब आती हैं तो वो क्या कहती हैं? Like do they like how do we make our skin tone lighter? Is that a question that you get often or no? Of course, yes. एक तो उन्हें ये बात समझ नहीं आती कि जो हमारा नेचुरल कॉम्प्लेक्स है ना आयशा, वो वही रहेगा। यस, अगर मौसम की वजह से, लाइक गर्मी की वजह से आप बाहर हैं तो आपको टैन हो गया है, या कुछ जो आप आर्टिफिशियल टैन नहीं यूज कर रहे, लेकिन वो नेचुरल टैन आपको हो रहा है, तो वो जो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स हैं, व्हाट दे विल डू इज एक्चुअली दे विल जस्ट हेल्प to bring back your natural complexion. It won't whiten you. It won't bleach you. Okay. और लेकिन ये चीज अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है उन लोगों के लिए। वो कहते हैं जी ब्लीच होने, और इन ब्राइटनिंग प्रोडक्ट्स में यूजुअली दे डू नॉट हैव ब्लीच इन देयर। दे जस्ट डू ब्रिंग बैक योर, जो जिसका कहते हैं ना कि तुम्हारा रंग जल गया है धूप में बैठ के, या कुछ इस तरह की जो बातें हैं, इट विल ब्रिंग इट बैक दैट वन, बट नॉट it won't make you
चिट्टा गोरा जो है. And what about this obsession, for example, हमारी generation versus our kids' generation? I think a lot of mothers may be bringing their daughters saying, "Oh, you know, ये Texas की heat में देखो इसका रंग कितना काला हो गया है, तो कुछ करे ना शायद जी इसके लिए कुछ recommend करे." और दूसरी चीज जो आयशा मैंने ये नोट किया है कि हमारे जो है ना लोग वो they will choose a foundation 3 shades lighter. Right. और उससे वो ये होता है कि वो आपका जो है ना वो आप जैसे मैं एक्चुअली बहुत वर्ड यूज करूंगी भूत की तरह आप लगना शुरू हो जाते हैं गोस्ट की तरह. Right. दे डू नॉट एंड इट लुक सो पेस्टी एंड एवरीथिंग और आप उनको कन्विंस नहीं कर सकते कि नहीं आपको अपने नेचुरल जो है उसके उस हिसाब से आपको फाउंडेशन यूज करनी है बिकॉज यू विल लुक मोर नेचुरल. लेकिन होता है कि नहीं यू हैव टू हैव अ लाइटर शेड और फिर वो लाइटर हाईलाइट करते हुए ना इट लुक्स लाइक इंस्टेड ऑफ लुकिंग प्रिटी इट लुक्स टेरेबल. राइट. और दूसरा एक जो है वो दे वांट girls to wear makeup and I don't agree with that. When the girls are growing up they should actually take care of their skin ताकि उनको skin के problems नहीं होंगे. If you have a good skin Right. you can wear makeup or you don't want to wear makeup, that's your choice. Yeah. But you should not hide your imperfections उसके साथ makeup के साथ because when you are doing that तो actually आपकी skin जो ज़्यादा uneven हो जाती है. And you have to really struggle and then a lot of people will use the things which are not good for your skin. They are so harsh. So उसको वो करने के बजाय ठीक करने के बजाय it really hurts you. What a great point. Right? Because we teach our daughters from 15, 16 के पूरा makeup आप थोपते हैं अपनी शक्ल पे because that's what is expected now you're growing up kind of thing. Yes. But you see like the girls in the white community in the Caucasian community वो कितना कम makeup use करती हैं लेकिन हमारी South Asian लड़कियां they're always like made up and I think that's just how एक हमारा एक पता नहीं societal pressure होता है शायद for our girls to do that. And some of these girls have more makeup than I do, when we go out. मुझे अफसोस ये होता है कि mothers, I try to educate mothers कि please उनको skin care पर उनके वो करें, not on the makeup. Right. और यहाँ पे जो white हैं वो they use so much bronzer कि उनका color जो है वो sometimes it's so artificial also. Right. Thank you so much, Aida ji. We'd love you to come back later on in the show and talk about how are we going to change these standards of beauty and how do we bring about more acceptability that it's okay. It doesn't matter what color your skin is. In every community, in the African American community, in the Black community, in the Hispanic community, there are always these degrees of how lighter skin is valued more than actually darker skin, right? And same with us. That's so true. And I feel also, to take, give another point of view is that just like Shahida ji said, also these filters that you have these days, they, even if you, once your picture is taken, I have seen so many of us want to go for a lighter filter, which makes you look fairer. And in fact, I had a very recent conversation with a friend whose daughter is a beautiful dusky color, and she sent off her picture to the family, and the family sent it onwards to another family group on WhatsApp, but having lightened it. Oh. So, this is just, as you said, it's an unconscious conditioning. And that is why awareness is the first step again here, to recognize and realize that what are you doing? Because, you're not only shaping a personality, but in the same way, you're creating a mindset, which is then passed down through generation and generation, which is exactly what jo pehle hum baat kar rahe the ki age, gender, nationality.
in a lot of India-Pakistan culture, exactly like SKFG said, because of colonization, because of the Mughal, Persian, and British rule, where dark-skinned people, as she said, were put for the more out there menial tasks, and the more lighter-skinned people were given the other ones. I think that's just passed down, and we've still not shrugged it off. So it's about time that we consider alternate ways of being and appreciating beauty as is. And imagine going back to what that WhatsApp message where the picture was lightened. Imagine what it does to the self-esteem of that girl. Okay, you know what? I'm just not pretty enough or good enough. Yeah, and I, in fact, sorry to interrupt, but I had another child, I remember, who I was coaching, and one of her, she was suffering from actually bullying. One of the bullying instances included the fact that the Desi kids used to call her Kali. So, that used to really, really upset her. And so these are all things that we need to really, really go 365 degrees on. All right. You're listening to us on Radio Azad, where your voice matters. You're watching us on Facebook. And the show is on Colorism. Our studio phone number is 972-501-9390. We'd love to hear what you're thinking right now. And we need to take a little commercial break, short one. Stay with us. We will be right back. सुन रहे आप रेडियो आजाद एंड दिस इज not coffee mornings, double shot espresso with Tasneem and Ayesha, and our topic today is on colorism. Let's see what you all have to say. 972-501-9390. We're also live on Facebook. You can post your comments there as well. Let's take a caller. Radio Azad, you are on the air. आदाब आयशा जी, तस्नीम जी। आदाब अर्ज़े, हक साहब, कैसे हैं आप? देखिए, इसीलिए मोहम्मद रफी साहब ने कहा था कि इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं जी। और अब रंग जो है ना, वो इस्तेमाल होता है इंटीरियर डिजाइनिंग में या घरों के डेकोरेशन में। हम इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्शन, और कॉम्प्लेक्शन शुरू ही होता है कॉम्प्लेक्स के लफ्ज से। बिल्कुल सही। और इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ने इस चीज को और हवा दी। लेकिन अब जो है कॉम्प्लेक्शन चूंकि लाइट हो रहा है, उसकी वजह ये इंटररेशियल मैरिजेस हैं, मल्टीकल्चरल जो मैरिजेस वगैरह हैं। वैसे ये जो है ना, हमारे यहाँ शुरू से अच्छा तालीम इतनी होती नहीं थी कि भाई कॉम्प्लेक्शन को बेहतर करने के जो तरीके हैं वो डाइट है और रेस्ट भी है। बिल्कुल सही है कि नहीं? उसमें कि 8 घंटा नींद सो, खाना है वो खाओ भाई जो तुम्हारी स्किन में ग्लो हो। कहते थे ना, हमारे यहाँ जो मजहबी लोग होते थे उनके एक रेगुलेटेड लाइफ होती थी, तो उनके चेहरे पे एक नूर होता था। तो वो नूर क्या था? उनका कॉम्प्लेक्शन था, वो ग्लो देता था। और मैं आपको एक जाती एक बहुत पहले की बात है, मेरी अम्मा बैठी थी तो एक खातून आई, वो किसी का रिश्ता लेके आया। तो एक और साहिबा थी, उनके बेटे के लिए चाहिए। तो उनका भाई वो लड़की कैसी है? कह लेगी भाई लड़की का मुझे नाक नक्शा तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन रंग बड़ा साफ है। राइट। गोरी है। बोले कितनी गोरी है? तो भाई गोरी इतनी है कि वो पान खाती है ना, तो उसकी पीक जो है उसके हलक से जब गुजरती है तो वो नजर आता है। तो मैंने कहा कि भाई पता नहीं, जिस तरह जैसे से तालीम आई वैसे वैसे हम जो है वो इस कॉम्प्लेक्स से निकले। एक्चुअली ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता था, जो कि तालीम से या दूसरे जो सोशल स्टेटस है वो उनसे दूर हो गया है। अब तो खैर मतलब ये चीजें ऐसी जो है वो, लेकिन सोसाइटी में जो बायस है और ये है वो पॉलिटिकल है ज्यादातर। और ये कि उसको हवा देते हैं लोग। लेकिन इसी मुल्क में 64 से पहले तो भाई कोई सोच नहीं सकता था बहुत सारी चीजें। जी हक साहब, डू यू थिंक कि हमारी सोसाइटी में अब ये परसेप्शन बेहतर हो रही है कि इतना तवज्जो नहीं दी जाए स्किन कलर को, या यू थिंक इट्स द सेम? इसलिए
कि लड़कियां एजुकेटेड हैं और इंडिपेंडेंट इस मामले में कि सोच की आजादी है उनको ना, तो वो सोचने समझने की सलाहियत। देखिए हम लोग हमारे यहाँ शऊर किसको कहते हैं? कॉन्शियसनेस जो है टू डिफरेंशिएट बिटवीन गुड एंड बैड, अच्छे और बुरे की जब तमीज आ गई तो आप में शऊर आ गया, और जब आप बाशऊर हो गए तो आप सोसाइटी को क्यों नहीं फेस करेंगे? बिल्कुल फेस करेंगे। बिल्कुल। बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया पहले से। लेकिन बहुत अच्छा टॉपिक है। थैंक यू। और इससे जो है कई गाने भी जहन में आए। बिल्कुल। जी थैंक यू हक साहब, थैंक यू फॉर योर कमेंट्स। और एक हमारी बहुत ही अच्छी और सीनियर आर्टिस्ट हैं फ्रॉम द पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री, अजरा मंसूर साहिबा. शी इज़ एक्चुअली वॉचिंग अस ऑन फेसबुक एज वेल, सो इट वुड बी रियली इंटरेस्टिंग टू हियर हर पर्सपेक्टिव के हमारी इंडस्ट्री में क्या परसेप्शंस हैं, क्या डिस्क्रिमिनेशन होती है against darker skin people, are whiter skin actresses and actors preferred or not, and is it across the board ke men jo hai they are acceptable just the way they are, you know, that whole thing of tall, dark and handsome. They're not going to accept a woman who's, you know, tall, dark and beautiful. वो तो है ही नहीं ना, टर्मिनोलॉजी में ही नहीं है, राइट? वेरी ट्रू. एंड आई हैव बीन पार्टी टू सो मेनी कॉन्वर्सेशंस वेयर यू नो शादी की बात चल रही हो, यू नो, एंड somebody has said हाँ लड़की तो बहुत अच्छी है बट सावली है, हाय बेचारी, like you know exactly everything is perfect but oh god that big but. So it's there. I mean it's definitely getting better. मैं समझती हूँ कि बेहतर तो ज़रूर हो रहा है, but still I believe long way to go. And so I think moving on, let's talk a little bit now about how do we think कि West ने कैसे influence किया है हमें इस you know colorism के subject में. How have we been kind of wrongly influenced by them? I would say obviously because we've you know kind of somewhere along the way ये prejudice आ गया है, bias आ गया है. So for me, if I had to start off, I would just say कि एक जो Western concept of beauty, which has really increased over the years, you know, because globalization हो गया है, तो अभी वो exposure है हर, you know, it's easily accessible. तो वो, do you think, Ayesha, has been one of the main reasons? Yeah, absolutely. That whole notion, which is, you know, transmitted through our media as well, that, you know, white is the standard. Yeah. Right? What you see on the screen, but what people don't realize is what you see in the magazines is airbrushed and photoshopped. The color is changed, the nose is changed, the chin is adjusted, the teeth are whitened, the hair is blackened, the eyes are made bigger, and what you see is not what is in reality. बिल्कुल. And these exact pictures and this exact media has found its way not only to malls and you know hoardings and all of that, but also into our homes, onto our phones. So you're like pretty much watching this day in day out, and it's unconditionally conditioning you to believe that fair is the only beautiful. Yeah. All right, we have a caller. Let's take them on the air. Radio Azad. Hello. अस्सलामुअलैकुम भाई, बड़ा जबरदस्त डिस्कशन और टॉपिक हो रहा है, और एज ऑलवेज थैंक यू. और दूसरा था कि वी आर लिविंग इन ए कैपिटलिज्म सोसाइटी, वी ऑल नो दैट. जी. तो वो लोगों ने भी बहुत एक्सप्लॉइट किया है इसको पैसा बनाने के लिए. मिसाल के तौर से उन्होंने क्रीम्स वगैरह निकाली हैं, दुनिया भर की चीजें निकाली हैं, ये वो, और क्या मैसेज जो है पोर्ट्रेट करना चाह रहे हैं, है ना. मतलब अगर वो चाहे तो वो पॉइंट को फ्लिप भी करें, लेकिन वो चाह रहे हैं ऑन द अदर साइड विच इज ए कैपिटलिज्म सोसाइटी. तो वो भी बहुत गलत हो रहा है, और इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए. ना इस तरह का क्या कहते हैं बायसनेस और इस तरह की चीजें तासुबी नहीं रखना चाहिए. ये मेरी ओपिनियन है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. आई थिंक दे आर फ्री टू डू व्हाट दे वांट. आई थिंक it is up to us whether to accept it or not. The skin whitening industry is a $30 to $40 billion industry. Bilkul. Somebody is buying these products, and why? Right? That's what we have to ask ourselves. Radio Azad, you're on the air.
नमस्ते आयशा जी। नमस्ते। बिल्कुल ठीक, आप बताएं कैसी है ममता जी? ठीक हो। मैं सुन रही थी ये डार्क कलर एंड व्हाइट कलर जो है इंडस्ट्रिया, मतलब वो तो जैसे कि मूवी में लोग ज्यादातर जो बहुत सुंदर गोरी लड़कियां रहती हैं या सांवली भी जो हैं उनका भी फेस देखा जाता है जी कि कितनी सुंदरता है। सांवला कलर कोई खराब नहीं होता है, फेस देखिए आप। और गोरे में भी, मतलब गोरा में थोड़ा फेस खराब भी रहता है तो लोग कहते हैं यार लड़की बहुत सुंदर है। शादी ब्याह के टाइम में बहुत इस पर वो किया जाता है, लेकिन ऐसा है कि केवल गोरा चमड़ा देख करके या सांवला, कुछ शरीर सांवली है, ये सब का कोई मैटर नहीं है। लड़की कैसी है, स्वभाव भी होना चाहिए, देखना चाहिए उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, क्या पढ़ी लिखी है, किस घराने से है, घर उसका, परिवार उसका, ये सब देख के भी शादियां की जाती हैं। आपके ख्याल में चेंज हो रही है ये चीजें? मेरे घर तो, हमारे घर में तो हम लोग तो बहुत गोरे, हमारी फैमिली में मदर साइड में बहुत गोरे, मेरी माँ बहुत गोरी थी, फादर सामने। अच्छा। तो उस तरह से कुछ बच्चे गोरे तीन भाई बहनों में और सांवले हो जाते हैं, पर मेरे हस्बैंड की फैमिली में गोरा का बहुत महत्व दिया जाता है। अच्छा। अब भी मेरे हस्बैंड को वही गोरा, मैं तो सांवली हूँ मतलब उतना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा। बिल्कुल। लेकिन ये है कि शादी ब्याह में तो बहुत क्रिटिसिज्म है, बहुत है, बहुत ज्यादा कर देते हैं लोग कि होना नहीं चाहिए। ज्यादातर ये स्वभाव पर भी डिपेंड करता है, और गुराई तो ठीक है, लड़कियों को देखते हैं कितनी सुंदर है, देख के आते हैं, वो जल्दी से शादियां हो जाती हैं। थोड़ा सामने लोगों की शादियों में दिक्कत भी होती है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती है। और इंडस्ट्री वगैरह में और मूवी वगैरह में तो ज्यादातर सुंदर लड़कियां रहती हैं, वही चुनी जाती हैं, गोरी रहती हैं। आपको भी मैंने देखा है फेसबुक पर बहुत सुंदर है। थैंक यू। तस्नीम आपको बोल रही है। थैंक यू सो मच। रेडियो आजाद, you're on the air. अस्सलाम वालेकुम लेडीज। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप दोनों? We are fabulous. How are you, Arjuman? We are doing, I'm doing wonderful. Absolutely amazing. बताएं आपका क्या व्यूज हैं? मैं ये कहती हूँ कि देखिए, ये तो शादी जो दूर की बात है, प्रेशर इज ऑन विद टाइम ऑफ योर बर्थ। जी। ये बच्चे पहले ही जैसे सवाल किया जाता है, बच्चा गोरी है, काला है, ये लड़का हो या लड़की हो, तो उसी वक्त आपको ना आपके पेरेंट्स को एक दफा एक गिल्ट में डाल दिया जाता है कि आपका बच्चा काला है। और even I even know a parent who treat their children differently because of the color. Yeah. Even the parents. Something? I'm not talking about the XYZ. So this is just for me it doesn't matter to me because मैं समझती हूँ कि आपकी personality होनी चाहिए more than your looks. That is I believe if I'm going looking for someone for my daughter-in-law or anything I will just look for personality. Color doesn't matter to me, the looks doesn't matter to me at all. Right. तो इंसान जब दोस्ती भी करता है, आप देखेंगे जो अच्छी शक्ल सूरत के लोग होते हैं उनके दोस्त भी ज्यादा होते हैं। I think just we have to break that norm. अगर आप किसी अपनी मतलब बहू देखने जा रहे हैं तो आप ऐसी बंदी को लेके आए जो कि कम शक्ल भी हो, उसकी पर्सनालिटी हो, तो someone we have to take that step. तो वो फिर वो चीज फिर वो फैलेगी। आपको फर्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा। आप यही करिए, वही आप हर कोई दूसरे बंदे पे डिपेंड करने लगे कि भाई somebody else has to start all आपको खुद स्टार्ट करना पड़ेगा। That's how it's gonna grow. That's how change happens. That's how change happens. I would say. तो एक गाना है, हम काले हैं मुतन दिल वाले हैं, something like that. हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। वही वाला। नहीं तो मैं वो तो ना तेरा वो कौन सा गाना है, तुझे डर किसका है, तेरा तो रंग गोरा है, तो ये तो गोरे वालों का हो गया गाना। तो ये गोरे वाले को गाने लगने नहीं चाहिए, आज काले वाले गाने। काले वाले गाने। हाँ वो गाने ना, काला शाह काला, मेरा काला है दिलदार,
ठीक है. और वो भी तो है गोरे रंग पे इतना गुमान, something like that, no? गोरे रंग पे इतना गुमान कर. Have it all down, huh, Tasneem? Yeah, because I was thinking of songs. I wanted to make sure that we don't like really profess, Goraism and play only those songs. I think today you're right, Arjuman. We should play the other ones. All right, Arjuman. My message would be, just look for personality, not for color. One thing I can maybe, I'll do it myself sometime. I do it. Just to clear my skin, put a mask or something, not to be Gora or something, just to clear out skin. And there's nothing wrong with that. But I never try to be lighten up my skin or whatever, Right. So आपको जैसा इंसान को खुद भी, दूसरे को तो छोड़ें, इंसान को खुद भी अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए, just the way they are, आप अल्लाह की क्रिएशन है, and be proud of it. That's the whole key. All right, Arjuman, good message. Isn't it something, just the way society defines beauty, right? It doesn't matter how the features actually are, as long as, the person is fair, automatically you're drawn to them and like, oh, kitni pyari hai. Yeah, like beauty is defined by the color of your skin. And I think I liked what Arjuman said, that it starts at birth. I have gone for so many, naming ceremonies where, in hush-hush conversations, I've heard people say, iska dusra beta to kitna gora hai, isko kya ho gaya? So, these kind of conditioning, ki there's a type to beauty. I think there is no type to beauty. There is fair is beautiful, dark is beautiful. There should be no type itself. Beauty is beauty, just as is. I have some stories about this. A lot of stories, actually. Let's take a caller. Radio Azad, you're on the air. Assalamu alaikum, Ayesha ji. Walaikum assalam. Kaisi hain? मैं ठीक हूँ. My name is Veena. I don't know if you recognize me or not by my voice. But welcome to the show. I'm enjoying your topic today, and I wanted to share a little bit behind this topic. So when I was born, I was fair. So I come from a very fair background. Like my parents are fair, so I was born fair. And then after school, like I think maybe I was like in 4th or 5th grade, and you know how you would have recess. And you'd go outside and you'd be out in the sun for about an hour. Right. And so I got really dark. And I started getting really like conscious. I was like, I'm very dark. I need to get white. So this Fair and Lovely thing came out where Katrina Kaif was like, she was the brand ambassador for it. And she was like all white. And I started applying that. And I was like, I'm going to use this. And I used it for a good 4 years. Wow. And and then as soon as I got into high school, obviously you're not out as much, and my complexion just started getting back to what it was supposed to be. It just made me realize how, like in your own skin, you don't feel comfortable, and we want to be something else that we're not. And so that was a very, very strong feeling for me afterwards. I was like, man, that was, it's a very big discrimination that we have here. Sure. So, Veena, when you got dark, when you started going out for recess and you got more tanned, did you get a lot of flack from your parents or other, older people around you, like, oh, what's happened to your color, and oh my God, all these kinds of comments? Not my family, not my mom and my father. My mom was against me using Fair and Lovely. However, I was very adamant. I wanted it. So I would do it regardless, and I would throw fits if I didn't get it. So they had no choice but to, give in. However, yes, family, extended family, yes. I used to hear, oh, tu itni gori thi, abhi itni kali ho gayi hai. Kya ho gaya tere color ko? And then not only that, I feel like discrimination is in men too. When my brother was born, he was very gora and itna khoobsurat. Like, I mean, women are supposed to be khoobsurat, right? Men are not. And so my brother was very khoobsurat and very gora. So like all of our khalas and papas and all of them would be like, oh, itna khoobsurat aur itna gora hai na, ladke ko nahi hona chahiye. So, oh God. Interesting. Yeah. So how have, one more question is, how has this experience changed you? Like, I don't know if you have kids, but if you have a daughter, how is this going to change what you think
going forward? So I don't have kids, but I feel like there is a change coming. I mean, I look at my in-laws. My mother-in-law is very a big feminist. And she's from a conservative background, but she's very feminist. She stands for, whether it's weight, whether it's color. I feel like even our older generations that are bound to have the same mentality, they're also changing as the time goes. And I feel like with me, the way this changed me is that, weight, color, all of this doesn't matter. What matters is your heart and how you really are. And I think that at the end of the day, I don't think, Khuda is going to be like, oh, you were this pretty, and so I'm going to give you this many points, It's more on how many good deeds you've done and how beautiful you are on the inside. So it just made me realize how it's not the outside that matters, it's the inside that actually matters. Perfect. We loved your comments. Be a regular caller. I will. I listen to you guys regularly. Thank you. Thank you so much. You guys. All right. That was a great call. So you're listening to Doubleshot Espresso with Tasneem and Ayesha, and the topic today is on colorism, and the studio phone number is 972-501-9390. So I threw out this question to Azra Mansoor Sahiba, who is listening to us in Pakistan, and she's from the Pakistani drama industry, and she writes, that it is now in the industry, it is not a matter of talent. I'm reading out her comment on Facebook, but the color of skin and beauty is what matters more. And also she goes on to say that men in the industry also are taking injections to become fairer. Thank you. I was just actually going to, further add to the previous caller, and so I'm so glad she's mentioned it. Because yes, on one hand we do है कि भाई boys को इतना pressure नहीं है, जैसे कि उन्होंने बताया कि मेरा भाई बहुत गोरा था तो it was also questionable. But in the same breath मैंने देखा है कि शादियों में boys also go to the parlor pre-wedding for a full whitening process, facial and उसमें whitening. And in fact एक horror story मेरे friends के wedding में हुई थी, जहाँ पे वो बेचारा गया और पता नहीं कौन सा bleaching pack लगा दिया, that it reacted to his skin. So on his wedding day he was looking a scary white. No. So ये भी होती है. और उसके बाद एक बहुत ही भयानक और भी एक story है, but I'll let you complete that comment because it's really enlightening. Yeah, no, that's what she was saying. But it's interesting, when our third child was born, Tasneem, so the hospital photographer came and took baby pictures and everything. So the second day we were just going for a walk around the corridors, and we passed by the photographer's room. So she had my son's picture up on her monitor, और वो गौर से देख रही है. So of course I recognized the baby's picture, and we stopped and we're like, oh, we're the parents, and this, and you had come to take pictures. And she looked at us and she looked at the baby, and I was like, what's going on? And she said, the baby is so fair, but neither of you are so fair. वो परेशान हो गई कि ये बच्चा कहाँ से निकल आया, Exactly. So meaning बहुत सारे इतनी एक्सटेंट तक भी गए हैं. तो ये जो मैं आपको भयानक स्टोरी बता रही थी कि यहाँ तक भी गए कि एक कंपनी है जिन्होंने क्लेम किया था कि आपकी जेनिटल एरिया को whiten करने के, they had a cream for that, and male and female. Goodness. And that's India की एक कंपनी थी जहाँ पे एक बहुत बड़ा अप्रोर फिर हुआ था. और उसके बाद 2009 में Dark is Beautiful, I think वो campaign launch हुआ था, which Nandita Das, she's one of a really great Indian actor, उन्होंने उनका brand ambassador बनी थी, and she had kind of spread that awareness on it. But can you imagine? Oh my God. Ridiculous. Oh my God. But okay, so Azam Sahab called in and said, it's a free country, and it's capitalism and all that. So they're free to have whatever businesses they want. However, it's incumbent on us as the consumer not to consume it. Ji. Right?
हम पर एक burden है. And I think that is how we can actually bring about change, and that's what we'll talk about in the next part of the show. You're tuned into Doubleshot Espresso with Tasneem and Ayesha. We need to take a short commercial break, so keep up those comments on Facebook, and of course on the air. We're absolutely loving the new voices that we're hearing as well, and keep it up. Tune into Radio Azad. This is where your voice matters.